Alright, so आज का डेट है 10th of September and today market made a pretty good gap of opening. I already had a position, so I did not create or exit any position today. So this is what the order book is. No orders. I put a stop loss just right now because there is a condition that if it invalidates, I have to exit the trade, and I don't want to take any losses in this particular position because I've seen a profit of approximately 60,000 plus in this particular trade. So I just want to give it some benefit of doubt. If it has to continue, it may continue. Otherwise, I'm going to share you some behavioral study that why this could be a possibility that this is a point it may fail or it may be a successful trade. Right from here, the decision will be made. सो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूं जो आप ध्यान में रख सकते हो. व्हाई डिड आई कैरी द कॉल पोजीशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो एंड व्हाई वर वी एक्सपेक्टिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ गैप अप and market can proceed on to the upside, and even if it gives us a gap down, still market has to go higher. The structure itself was good enough to tell us that the market has invalidated the possible trap that we took short from here, and that is why I carried some call position in deep OTM because I didn't want it to give me a lot of losses. That is why I carried for a deep OTM. Now I'm going to share you one structure that is going to be very, very, very valuable if you remember this. This happens in the bullish market as well. So if the market has to go higher and sustain and continue right from the top, what it generally does is it sweeps liquidity first before going higher. So if it opens at a higher level and creates the supports, then before moving forward, what it does is it holds and makes a breakdown failure and starts going higher like this. Or what it does, it can go for selling, take a pause and extend the selling and then will start to move higher. In that case, market can hold and continue like this. But whenever market gives you a small selling, do not extend it. Immediately reverse that selling into above the day high. And when now it creates a resistance and gives you an immediate breakout, there's a possibility for a very quick retracement in such scenario. Now, what happens if the retracement gets completed in two waves? Then it can go probably sideways and then may go higher on the next day like that. And if the retracement doesn't happen like that, instead of just continuing, it goes for a resistance creation and reverses a swing and then makes a momentum breakout of any swing high can result into the change of structure that can lead to the further sell off. So this is why this is a point of decision making. But if against this whole buying, if this was just a retracement and it created a support that hold for a while, and if it gets a momentum breakdown, we follow through candle, but the next candle is not engulfing, it's an inside candle, right? So how it moves forward, either it will fail by breaking this low, either the upside possibility will get invalidated by breaking this low, or what it does, because this is not an engulfing candle, what it does, it breaks out and then comes back within the range and then starts to continue, right? So this could be a good scenario where a stop loss will be defined for failure and the acceptance of failure is logical at that point of time, right? But if it has to move forward, it will not fail and continue on the upside. Either of these two things can happen, right? Now if this was a swing reversal showing the sign of weakness, then for it to make a momentum failure, what it needs to do is it should have gone directly straight to the upside and should have given a breakout failure that could lead to a downside momentum. That has not happened here, right? So either it is going to fail right from here and then eventually today, tomorrow or anytime soon, it will use any of the swing high to take liquidity trap to provide a momentum trade. This is what are the possibilities that is available right now, and that is why from the morning I was holding this trade despite of 60,000 plus. I was not booking the profit because I was expecting the market could hold and eventually continue out to the upside, because that was not the expected target that I was looking for. But since I was analyzing the market, I figured it out that there's a possibility this could be the end of the move if it do not continue today. Because previously what has happened, here we see a distribution phase. If you see it clearly, you can identify the price has shown weakness here. It sold out, went higher, shown a sign of weakness, reverses a swing, took a breakout failure and continued on to the downside. Now when such kind of selling happens,
the first retracement area plays a very important role, because when the market comes back, generally it utilizes this point as a liquidity trap for bigger move onto the downside. So if this is meant to happen, we'll get to know very soon. So what market did today is it just made a breakout of this, just made a breakout above this and failed and continuing downside. So now for it to move further higher, it is very important that it should invalidate this level, or it will work and will eventually continue onto the downside. So giving it some benefit of doubt, as per initial plan, I'm holding the trade. I'm expecting this gets invalidated. If it does not, I'll have to accept the failure and will take whatever losses or at break even from this particular trade, because it's not going to give me any kind of losses, because I entered at 30 rupees. Now I've trailed my stop loss to 32. So there is no chance for making any losses. But yes, I am losing, I am leaving the profit of 60,000 just because of the expectation that I have. And if it was an intraday trade, if it would have been an intraday trade, then I would have exited right here, because whenever the high breaks, resistance created and it makes a strong breakout, it invites a very strong retracement. This is what the structure is. So this is what the whole explanation that I have to share, and this is the condition for failure. If it goes below this, I will exit the trade. If it sustains, I will wait for the breakout. The time is currently 1:48. We do not have a lot of time, probably 1.5 hours, and we'll see what gonna happen. So I'm not going to recording and going to record this particular phase. It's a positional trade. I'll update you. However, I'll update you whatever happens, and we'll see what kind of possibility we can have on the next day. I'll include the analysis toward the end. Okay, I'll update whatever happens. Okay, so here's a quick update. I trailed my stop loss to 35, because if it has to go right from here, then the entire structure would have gotten invalidated. That is why I didn't want it to lose much. ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं था, but this is where from the area where the buying has to happen, and that has actually happened. So now I'm going to put a stop loss to this level, because if this gets reverted completely, then there is no point of sitting in this trade. So I'm putting it to 37, 35. And now at least I'll be booking approximately, not much, but still 10, 11, 12,000, something like that. At least I'll be taking that much. But yeah, this is the point from where it has to make a decision whether it wants to sustain the buying and continue further onto the higher side, or it actually wants to again create a major trap on a daily time frame and go for a big dump. So this is the point. Still not very confirmed. It has to break the high, invalidate the possibility of the trap that has happened in the morning. But yeah, this could have been a possible trap on a bigger time frame and could have lead to bigger fall. But since this buying is happening, if it sustains, if it sustains instead of taking liquidity from here, if it sustains instead of taking liquidity from here, then possibility is very high that it will invalidate the possibility for this being a momentum trap, and then it can proceed further higher. But if this buying, the way this buying is happening, if this buying candle uses this level to create a trap, then the possibility for the downside will be very big. So I'm just letting it to do what it wants to do without thinking too much. And if it has to sustain, it will sustain. It do not want to sustain, it won't sustain. I'll give you an update after that. Alright, so the trade has been completed and I exited at the trailing stop loss, going out with a profit of 10,000, which is equivalent to yesterday's loss, because yesterday भी 10,000 का लॉस था, जो 3-4,000 का एडिशनल लॉस था उसी ट्रेड का पार्ट था, जो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, 60,000 गया, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू बुक इट. और ये मेरे साथ बहुत हो रहा है रिसेंटली, जब से मैं पोजिशनल ट्रेड के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ. आई एम सीइंग गुड प्रॉफिट, बट आई एम नॉट एबल टू टेक इट because of positional view, and market is keep on flipping between one side to other side. All right, so market बंद हो गया है और अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, so that we can have a very clear idea about tomorrow what is the possibility that it can give. And market ने आज भी कल की तरह तो नहीं, कल से बेहतर क्लैरिटी यहाँ पे देके गया है मार्केट की कल की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है. टुमारो इज गोइंग टू बी एन इजी डे, और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल हो सकता है एक बहुत बड़ा धमाका
बट उस धमाके के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोर्सेज के बारे में हमने बात करी थी और जो भी रिस्पॉन्सेज आए थे उनमें से ऑलमोस्ट सबसे बात हो चुकी है। एक दो लोग हैं जो फोन पे अवेलेबल नहीं थे और कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो स्टूडेंट रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। यू नीड टू बी फर्स्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर इंडल्जिंग इनटू ट्रेडिंग, इसलिए आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। एनी पर्सन हु हैज एन एक्सपीरियंस लेस देन अ ईयर वो भी इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन देयर आर सम room for the responses, and this is again going to be a final call. If you want to join the course, you have to submit your response before Friday, and if 7 to 8 responses will be needed because that many participants has been eliminated from the possible final batch, and that is why I'm again giving you the Google form in the description. If you really want to join the course, if you really feel understanding of this kind of market behavior can help you to take one step further, you can consider joining this. And after Friday, whatever the responses will be there, whether it comes or not, I'm going to finalize the batch by Sunday. So the form will be removed by Friday. So don't forget to do that, otherwise you'll miss this particular opportunity. And the fee for this particular batch, I'll tell you personally, but the fee for the next batch after this particular one is going to be slightly higher, because with each batch the course content is getting refined and you'll get a refined version of the course. That's why the prices will keep on increasing batch by batch. For this particular batch, you do not need to be worried about it, because of your help the course is going to be much more refined. You'll get the access for the third batch for revision purposes. सो हैविंग सेड दैट, आगे अब एनालाइज करते हैं। सो जैसा अभी मैं आपको अपना पोजीशन नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई एम टेकिंग सम पोजीशंस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मार्केट में जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पहला रिट्रेसमेंट एरिया था दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज के दिन मार्केट ने उस एरिया के ऊपर जाके एक ट्रैप का फॉर्मेशन करा है, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल हमारे लिए मिल जाता है ये, जो कि हमारे बाइंग साइड के ट्रेड पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद सीधा इसको ब्रेक करता है, टेस्ट करता है मॉर्निंग में ही, तो मॉर्निंग में ही नीचे की तरफ से बाइंग साइड की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर आप पिछले कुछ दिनों से वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट हैपनिंग इन द मार्केट। मार्केट ना अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके के सेटअप्स क्रिएट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो इस फेज में मार्केट में इसी तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके के सिचुएशन बनते रहेंगे, बट रिसेंटली जो भी पॉसिबिलिटी मार्केट प्रेजेंट कर रहा है उसको एनालाइज करने का तरीका यही दिख रहा है, और ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ और हो रहा होता तो शायद कुछ और पॉसिबिलिटीज बन रही होती, बट अभी के लिए ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल ये है। तो बिफोर दिस यू शुड नॉट कंसिडर बाइंग ट्रेड। अगर बहुत नीचे से रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट अभी फिलहाल जैसा सिचुएशन बना है उसके हिसाब से मॉर्निंग में बाइंग साइड का ट्रेड विल बी अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड जब तक ये हिट ना हो जाए। और जैसा हमने डिस्कस करा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें हो क्या रहा है कि बाइंग साइड जाने के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसके बाद जो सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके नीचे मार्केट चला जाता है और उसके बाद किसी ना किसी स्विंग हाई को पकड़ के वो ट्रैप बना देता है, और उसके बाद मार्केट में अगले दिन मोमेंटम मूव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसलिए आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो सेम तरीके से मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बाइंग को रिवर्स किया है, और इवेंचुअली जाते जाते मार्केट ने इस स्विंग हाई को के ऊपर जाके नीचे की तरफ क्लोज किया। इसका मतलब दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्रैप अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए या फिर ओपनिंग के बाद इस लो को टेस्ट कर ले, इसका मतलब दिस बिकम्स अ वैलिड ट्रैप। इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट कंसीडर बाइंग ट्रेड अंटिल इट इनवैलिडेट्स दिस लेवल। बट इसको एक वैलिड ट्रैप बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे कंटिन्यूएशन दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल के लिए फाइनलाइज करोगे। अगर वो नहीं होता है, यहाँ ओपन हो जाता है या फिर ओपनिंग में यहाँ से निकल जाता है, तो दिस विल बी द ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल। उसके बाद ही आप बाइंग साइड का पॉसिबिलिटी कंसीडर करोगे लोअर प्राइसेस से। लोअर प्राइसेस से क्यों? क्योंकि मार्केट पूरे दिन सेल ऑफ हुआ है और एक बाउंस के साथ क्लोज जरूर हुआ है, बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग के साथ इसको वैलिडेट करे और उसके बाद कोई सपोर्ट लेता हुआ एक रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद इवेंचुअली सेल ऑफ होने जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर ओपनिंग के साथ सेल साइड जाता है तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करना है।
जब तक मार्केट में सपोर्ट फॉर्मेशन और एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप नीचे का ट्रेड कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग में मार्केट एक बाइंग मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू विल हैव टू वेट फॉर अ सपोर्ट फॉर्मेशन, अ बाइंग मोमेंटम एंड देन यू शुड लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ये तो केस हो गया ऐसा। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट ओपनिंग में ज्यादा नीचे खुल जाए तो उस केस में एक बाइंग मोमेंटम पहले आने दीजिए, बिकॉज यहाँ से बाइंग साइड का सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ है। बाइंग आने के बाद जो रिजेक्शन फेस करेगा मार्केट, उस रिजेक्शन के बाद एक कंटिन्यूशन अटेम्प्ट आने दीजिए। उस कंटिन्यूशन अटेम्प्ट के बाद जब मार्केट सेल होगा तब आपको सेल साइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी वहां पे एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस दैट मार्केट कैन ऑफर फॉर टुमारो। और अगर ये इनवैलिडेट हो जाता है तो फिर आपको पता ही है, ये वैलिड करके इनवैलिडेट हो जाता है तो भी आपको पता है क्या करना है। दीज आर द सिंपल situation market behavior that we can follow. Alright, so that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.